ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड जेएस? जेएस चाहिए ही क्यों था एट द फर्स्ट प्लेस? फॉर स्क्रिप्टिंग, right? Right. So remember we talked about front end and all, right? So front end, and I told you it's gonna be divided in markup, styling, and scripting, right? ऐसा कुछ बताया था? Yes. So now the scripting is fulfilled by JS or JavaScript that we are currently learning. Quickly tell me, JS, is it a strictly typed or loosely typed language? Loosely typed. Okay? So let's see what do we mean by that. The font is visible, right? Or should I zoom it out a bit? Fine. So JS is loosely typed. To prove this, हमें क्या करना पड़ेगा? First, we need to talk about something that is called variables. So I need anyone of you to tell me कि analogy क्या ले सकते हैं for variable? मतलब if you want to take an analogy for variables in daily life, कुछ जो कि आपके दिमाग में आता हो, everyone. Container, right? So that's again sort of correct. So we can go with a container, right? A container of what? Container of what? Values, values, right? Container of values, values. Now ये जो values store करते हैं हम variables में, उनको क्या बोलते हैं? Elements HTML में बोलते थे. How many of you guys think कि we can call them data types? Variables are gonna contain some sort of data type. 1, 0, anything? Right, right. So it's gonna hold data types. Now let's talk about data types. What do we mean by data types? ठीक, तो data types कितने तरीके के बताए मैंने JS में? In JS, how many data types do we have? 3, 2. Okay. What if I tell you that we have 2 types of data types? One is called primitive and the other is called non-primitive. Remember? याद है? याद है क्या? Primitive, non-primitive. Everyone? Right, right, right. ठीक है. तो primitive में क्या क्या आते थे? Primitive, if you may remember, what all did we had in primitive data types? और सबके रिस्पॉन्स चाहिए. The people who were responding initially वो भी आज नहीं कर रहे. क्या हुआ? Okay. तो we have number, we have string, we have boolean. Correct. Number, strings, boolean. What else? What else? चलो फॉर नाउ इतना है. फॉर नाउ इतना है. उसके बाद non-primitive, have we learned anything that comes from this section? Non-primitive data types. Remember array, array, right? Array yaad hai? Right, right. Yes, and we're going to have objects, but for now we have learned only these data types. Correct? Am I missing something? नहीं. ठीक है, चलो. So now we put data types in variables, so we can say variables are container of values, rather container of data types, right? ठीक है. Now let's talk about variable a bit. So we can define variable as var, can we? Right. So if I write var a, am I declaring a variable? Everyone, can I say that I am declaring a variable just by writing line number 16? Yes, yes.
तो मतलब I'm just saying कि I am declaring a variable. ठीक, उसके बाद आता है giving it a value, right? So I can say if I write a equals to 10, am I assigning it a value? Value assign कर रहा हूँ, right? So I am assigning a value, right? Or usually we don't do it in 2 steps. It gets done in 1 step only. So we can go and do something like this. ठीक? But it's gonna include 2 steps. First is declaring. So that already happens, and then we are assigning it a value. इतना clear है everyone? Clear? Clear? ठीक? Now third step is printing. So how do we print in JS? JS में print कैसे करते हैं? console, right? We're gonna write a console.log a. ऐसे लिख सकते हैं. But there is one more step that can happen after assigning a value, that is reassigning a value. Yes, is this thing true? That happens, right? So can I say कि just because this happened, only because I have updated a number, मैंने a को 10 value दी and I updated with a number that is 15, I can say कि JS is loosely based. Is this enough evidence to say that or no? अच्छा, I would say no. क्यों? Because if you go in strictly typed language, you have assigned a variable, let's say it's called a, and you have given it a value 10. If you go and reassign it with 15, it's going to get reassigned. It's not going to give any error. Acha, what do you guys think? Am I going to get an error in line number 20? No? Okay. How about if I run this code, what am I going to get? String, right? What are we doing different? अलग क्या कर रहे हैं इधर के reassigning से and इधर के reassigning से? What are we doing different? Data types, right? Right. One, either in here when we were reassigning a value, we kept the data types same, but now we are getting a different data type to be reassigned to a different data type's value. ठीक? This is enough evidence to say that JS is loosely typed. Clear? Why do we call JS a loosely typed language? Clear, everyone? Any doubts till now? Anything? नहीं? ठीक है, ठीक है, all right. So let's quickly get with primitive data types, right? Primitive data types के बारे में quickly बात करते हैं. So now primitive data types, I mean, I'm gonna include our mathematical operators in here only. So let's quickly discuss mathematical operators, right? Given that हमने सब सीख लिया है, तो just wanna run everything through. ठीक? So we have plus, we have minus, we have multiply, and we have divide. Usual stuff. What's new? Anything else that I'm missing in mathematical operators? Mod and the exponential operator, right? Power. Tick. So I'm missing these. Tick. So let's say I have a variable a equals to 10 and I have a variable b equals to 20, and I go in here and if I do console.log 10 to the power 2, what am I gonna get in my console? Hundred, right? And what's gonna happen if I do this?
अभी क्या होगा, I have combined our, oh, that's fine, comparison operator we already know, that's fine. But line number 35 में क्या होने वाला है? It's gonna be true, even, right? ठीक है, तो we are very clear with these two. ये दोनों क्या काम कर रहे हैं? All right, quickly tell me what's gonna happen now. If I write a variable a 10, and if I write a variable b 20, and if I do a console dot log a plus b, क्या होगा? If I console line number 41, what am I gonna get? 30, 10, 20. Okay, okay, okay. So let me just go back to file. And if I remember correctly, this is version. Cap n के अंदर revision. ठीक है, तो if I run it, next, ठीक, so I'm getting 10 and 20. Why? Why? Okay. So did we learn something that was known as concatenation? Concatenation. Right? And what was the thumb rule to understand कि यहाँ पे concatenation होने वाला है या नहीं होने वाला है? Right? दो चीजें थी, एक कि the string is gonna be involved, right? And plus is gonna be there, right? तो चाहे कितने भी नंबर हो, अगर कोई एक string है and there is this symbol, we know कि concatenation is gonna happen there, right? So if I do this, last name, right? अगर मैं यहाँ पे अच्छा, you guys do this. Let's say I want to print a full name, right? So what will I do? I have to add first name and last name. How can I do that? Everyone in chat. Okay. A, B, की C, D. ठीक, yeah. ठीक है, तो all we have to do is we have to just go and write console dot log C plus space plus D. Is this gonna print the full name? Right? So yeah, this is our concatenation. All right, तो concatenation पढ़ रहे हैं. Let's quickly discuss our string here only. ठीक, तो string के बारे में समझते हैं. Now, string. How many ways to define a string? String को define करने के कितने तरीके होते हैं? Remember people. Correct. So there were three ways, right? Three ways to define strings, right? पहला क्या था? Double quotes, right? तो strings. दूसरा क्या था? Single quote and strings. And तीसरा क्या था? We can use this. So this can be also strings. ठीक, so we had three ways of defining strings. We know the purpose of these two. ठीक, basically हमारे whenever we write a paragraph and we want to include something like that's there, so we can go with these two. But तीसरा वाला is special and we can do one more thing with this. What's that?
What's the name? नाम क्या था? Remember? Template literals, right? Right. So let's say did I take it? Let's have a where price equals to 100. And in here, if I go and write console.log, and the price is price. Abhi, what am I gonna print? Everyone, what am I gonna print in here? Price is 100, right? So if I do this, is it still gonna print the price is 100 or is it gonna print price is 500? 500, right? So we are making strings dynamic by using template literals. Tick. So this is basically template literals. Okay. Right. So yeah, that's there. Now let's talk about accessing the string. Let's cover it here itself. So let's say we have a where str and so quick round box, right? Let's say static and dynamic. All right. All right. So guys, do you know difference between static and dynamic? Like I throw these keywords around, but do you know the meaning of these two? All right. Okay. So static in normal definition in English, you can say, I mean, what can we say? Ruka hua, right? So basically, this is something that you can say fixed. All right. Whereas for dynamic, you can say can be changed, right? So whenever I say static, right, that means that thing is not gonna get updated, right? Whereas whenever I say dynamic, that means that thing is gonna get updated, right? That's why I'm saying template literal is used to create dynamic strings. Why? Because once we have written this, we don't need to update the entire string again and again. We just have to update the variable and it's gonna get changed. Clear the difference between static and dynamic? All right. Okay. So let's get back to our sentence. I have this string. What if for some reason I want to access just this queue? Is there a way that I can do that? कोई तरीका है क्या करने का? Is there a way? Come on, guys. I have to just print this queue. Only this queue, not this entire string, just the queue. Can I do that? String and index number, right? So all I have to do is I have to write console.log str and square brackets. इसके अंदर क्या आएगा? Index आएगा. Now what will be the index of queue? 1, 2, 3. The space, is the space counted? Space count होगा क्या? Yes, right. The space will be 4 and queue will be 5. So if I write string 5, am I going to access that? 4. Why? Why 4? 4q. Because index starts at 0. Correct. Right? So if I do str4, I'm going to access that particular queue. Right? All right. So what if I do something like this? M, right? Now I should be printing M, right? I'm reassigning the value. Right? Everyone with me? I'm going to update the queue with M.
yes, no, no, yes, no. Okay, why not? Why not? क्यों? Immutable, immutable primitive. Correct, correct. So we talked about something that said strings are immutable, right? What was that? हमने क्या बात की थी? कहाँ गया वो? Primitive and non-primitive, right? So primitive data types, these were immutable and these were mutable. Now, what do we mean by immutable and mutable? अच्छा, what do we mean by mutate? Mutate का मतलब क्या होता है? Just the meaning, nothing else. Correct, Abhijit? Changeable, right? Changeable, correct. So non-primitive data types are changeable, whereas primitive data types are non-changeable, right? So we can't do this. That's not gonna work. Let's say in that place I had an array. Array किस में आता है? Non-primitive में, right? So if I have array and if I did str, no, not str, array 3 equals to 5, right? If I did a console dot log array, was I gonna update 4 with 5? Yes, yes, क्योंकि that is mutable. Well, right? ठीक है, तो array की बात बाद में करेंगे, अभी पहले string की बात कर लेते हैं. ठीक. Now we know कि strings are immutable. Anything else that we know about strings? Strings are immutable. Anything else? अच्छा, do we know any inbuilt functions for strings? कुछ है क्या that we might use? Okay, all right. So let's say I want to calculate the length of this entire string. How can I do that? String.length, right? So I can go and write string.length. This is going to print the length of entire string. Anything else? Achha, let's say I have a string, right? str2 per se, and in here I have everything that is in small letters. How can I make everything in capital? सबको capital कैसे करूं? Each and everything. अच्छा, I'll give you guys a minute. Go and check MDN and tell me quickly क्या था? What was the inbuilt function? Uppercase, two uppercase, right? So all we have to do is whenever string 2 dot 2 uppercase and we have to call it, right? If I do that now, if I'm printing it, abhi wo small, it's gonna get converted into capital, right? And that goes vice versa for converting capital to small, right? So we know about two lowercase 2, right? So we have string dot 2 uppercase, right? And 2 lower case. ये दोनों. Anything else? Anything else that I might have told you guys? अच्छा, split कितनों को याद है? Split. Anyone remembers split?
बस मेंशन याद है, यूज करना भले ही भूल गए हो, याद है पढ़ाया था कई वर्षों पहले। करेक्ट प्रवीण, राइट। तो वेयर इज दैट स्ट्रिंग, मेरी स्ट्रिंग का है here, right? So if I pick this string and if I do something with it, इसको string 3 बनाते हैं. Now let's say I want to break this string with each and every words intact, right? तो the अलग होना चाहिए, quick अलग होना चाहिए, brown अलग होना चाहिए, fox अलग होना चाहिए. We can do a split on it, right? So if I do str3 equals to str3 dot split, और इसके अंदर क्या करूंगा मैं, इसके अंदर आई एम स्प्लिटिंग इट विद स्पेस, राइट। तो हमें स्प्लिट लिखना है और उसके अंदर भी प्रोवाइड द पैरामीटर किस चीज से हमें उसको स्प्लिट करना है। तो इफ वी वांट टू स्प्लिट विद स्पेसेस वी कैन डू दैट, राइट। तो व्हाट्स गोना हैपन इफ आई डू अ कंसोल विद इट, एवरीवन प्लीज राइट इन चैट, इफ आई डू अ कंसोल डॉट लॉग ऑफ str3, what am I gonna get? ठीक है, इट्स गोना रिटर्न एन एरे। हाउ विल दैट एरे लुक, कैसा दिखेगा? Correct. If I do node index, I don't have an index file, so I'll be doing node revision, right? So this is what I get, right? हर एक word is been splitted and divided according. ठीक है, अभी याद आ गया, right? So let's say I have a string that looks like something like this. Now what? How can I get this type of structure now? पूरा लिख के भेजो, पूरा फंक्शन लिख के भेजो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट अपडेट द पैरामीटर। तो क्या करना है, स्ट्रिंग 3 डॉट स्प्लिट, और उसके अंदर rather than going for empty array, empty space, we will go with asterisk, right? Now if I do node not index revision, I can't do it twice, array पे नहीं चलता है, split only works on string. And why it gave error, एरर क्यों दिया, कैन वी गेस पीपल? आई एम गेटिंग दिस एरर, क्या बोल रहा है, str3 डॉट स्प्लिट इज नॉट अ फंक्शन, वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू रीड एरर्स। जस्ट आई वांट गेस कि क्यों एरर आ रहा होगा, इफ यू गाइस कैन गेस। Alright, let me give you a bit hint. In line number 77, what is the type of str3? Remember type of, right? It gives data type, right? So what's the type of in line number 77 for str3? A string, a string. In line number 79, what's the type of array or object? Array, right? But basically array, right? So in line number 81, we are picking this str, we are running it on an array, right? And split is an inbuilt function for strings only. Okay, so I'll have to comment this one out. I'll have to run it again. Now we are still getting that. Okay, and let's say I want to split each and every element inside that string. How can I do that? Each and every element, सबको split करना है, neither spaces nor star, हर एक element को split करना है. What's the code then? Correct.
लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी. Correct. All we have to do is we have to write str3 equals to str3 dot split, and we have to just split with elements. उसके बीच में कुछ भी नहीं आएगा. So now if I do it, now I'm gonna get each and everything. Clear? Is split clear? Right? So this thing is gonna be very useful for you guys. Split ध्यान रखना. ठीक है? तो for now जब आप OJ पे जाते हो, right? So if I go on OJ, let me check if I have any links or something. Yeah, I do have a link. Perfect. So in here, if you go on OJ, for now you get this pre-written piece of code, right? एक function लिखा होता है. Inside that you get this variable Australia, you get this England, right? But later क्या होगा? You won't be getting anything. तब आपको ध्यान रखना है, you are gonna use this thing very extensively. Daily हर एक problem हर एक code में use कर लो. तो is it clear how split works, everyone? Split clear है? All right. So let's move forward. चलो. So we have covered strings, we have covered number, boolean. Do you guys remember boolean क्या क्या करते हैं? How many values do we have in boolean? True and false. बस यही दोनों थे, right? Remember, you guys remember that. All right. So let's quickly talk about something that is called comparison operators. ये याद है comparison operators? क्या क्या आते हैं? क्या क्या आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स में? comparison, not conditional. Comparison. Correct. So basically we have two variables. Let's say I have a which is, again, of course it's going to be 10, and we have a b, of course it's going to be 20. And if we have to compare these two variables, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, कौन बराबर नहीं है, we are going to go with comparison operators, and this includes mainly greater than, less than, and equals to, right? But this thing overlaps with assigning, right? Whenever we assign something to a variable, we go for equal, this sign, right? So in programming, rather than checking equals with this, what else do we use? इसके अलावा और क्या यूज करते हैं? We go with double equals. Right? So basically it's going to be these things, right? Quickly tell me, if I write console.log a greater than b, what am I going to get? Is a greater than b? No, right? No. So it's going to be false. All right. What about now? अभी true होगा. And what about now? This is going to be false again, right? But there is something more. Basically, let's say if you want to check if there is something in range, right? So let's say we have another variable which is c, that is 15, and we have to check if 15 is at least greater than 10. Right? So let me write the problem. Let's say I have a variable c, and I have an unknown variable that is called variable d, right? For now I'm giving it a value, but let's say it's an unknown variable, and I have asked you guys, I have to check if this variable d, is it less than or at least equals to 15. How can I do that?
I have to check if the variable d is less than or equals to 15. Correct? Correct. So I can go and write console.log d is less than or equals to c. Can I write this? Right? So we have greater than less than, right? So ये भी होता है. So we have this thing also. We have ranges greater than or equals to, and then after these, इनके बाद there is one more thing, that is triple equals to, right? A पे लिखता हूँ triple equals to. Let's quickly do a check. What is the difference between double equals and triple equals? If you guys remember, please tell me. Difference क्या है? So is double equals to for data types or is triple equals to for data types? So triple checks data type. No. Assignment operator नहीं है वो. It's comparison operator, right? Equals to को बोलेंगे, सिर्फ अकेला equals को बोलेंगे assignment operator, right? Operator भी नहीं लगाएंगे for now. ठीक है? Call it equal operator, I guess. That's fine. ठीक. So here's what happens. Let's say I have a variable जिसको बोलता हूँ मैं 10 and we can't do the same thing again and again. I have a number which is 10 and I have a string which is 20, right? Quickly tell me, if I do, इसको भी 10 ही रखते हैं. Why have I made it 20? If I do num equals to str, what am I gonna get? Am I gonna get true या false answer? True. But why? एक string है, we can clearly see that. Right. If I run it, हमें ट्रू मिल रहा है, राइट? 2 ट्रू भी मिल रहे हैं फॉर दिस. इसको मैं कर देता हूँ. ठीक. We are getting true. Why? Given that one is string and another is a number, when we use just double equals to, it only goes and checks values. But still values तो बराबर नहीं है. एक number का 10 है, एक string का 10 है. What's happening in here? Is there a process, a name of that process जो कि हो रहा है in line number 111? अच्छा, let me know if you guys remember type coercion नाम की चीज. या फिर एटलीस्ट इतना याद है कि ऐसा कुछ पढ़ा था. ऐसा कुछ पढ़ा था, ये याद है, राइट? अच्छा, चलो. तो इफ अच्छा, क्विकली बताओ, कॉन्कैटिनेशन के लिए 2 कंडीशन, मतलब फॉर श्योर क्या कंडीशन चाहिए थी? मैंने अब भी डिस्कस किया. एक तो वी शुड हैव एक वेरिएबल जो स्ट्रिंग होता है, राइट? डू वी हैव अ वेरिएबल दैट हैज अ स्ट्रिंग? वो तो है, राइट. एंड वी शुड हैव प्लस, राइट? दिस शुड बी प्रेजेंट फॉर कॉन्कैटिनेशन, राइट? तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन होने का तो चांस ही नहीं है, हम लिटरली कंपेयर कर रहे हैं. यहाँ पे क्या होगा? व्हेन कॉन्कैटिनेशन इज नॉट हैपनिंग बिटवीन 2 वेरिएबल, देयर इज समथिंग दैट टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड टाइप कोवर्जन. वो क्या करता है? जावास्क्रिप्ट क्या करता है? व्हेन इट कंपाइल्स दिस एंटायर थिंग, नो, इट्स गोना गिव देम, मतलब इट्स गोना assume these two as equals, right? तो अगर प्लस इंक्लूड नहीं है, if I go and if I do num minus str, what do you guys think? इस हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए? राइट. तो if I run it, we'll see कि हमें 0 ही मिल रहा है, राइट? तो अगर प्लस इंक्लूड नहीं है
type coercion is gonna happen when we are dealing with two different data types. ठीक है, but वही once this has been included and string is there, we know what's gonna happen. अभी क्या प्रिंट होने वाले? 10 10 10 10 प्रिंट होने, राइट? ठीक है, तो quickly getting back to our initial thing, this is gonna give true, but if I write triple equals to, अभी क्या होगा? अभी it's gonna give false, right? तो can I say कि double equals to checks only value and triple equals to checks only data type? क्या ऐसा कुछ बोल सकता हूँ मैं? सोच समझ के बोलना, टेक योर टाइम. नहीं, राइट, इट्स नॉट प्रॉपरली ट्रू. करेक्ट, करेक्ट. तो ये सिर्फ डेटा टाइप नहीं चेक करेगा, इट्स गोना चेक वैल्यू ऑल्सो, राइट? तो चेक्स वैल्यू एंड डेटा टाइप बोथ, राइट? तो क्या मतलब, अगर इधर वैल्यू अभी ट्रू आ रहा है, राइट, अभी फॉल्स आ रहा है, बट वही अगर मैं इसको क्या, यू गेट द आइडिया, राइट? इट्स गोना चेक वैल्यूज एंड डेटा टाइप बोथ. मान लो अभी क्या होगा, लाइन नंबर 111 क्या देने वाला है? इज इट गोना गिव ट्रू और फॉल्स? ट्रू देने वाले, राइट? तो इट्स गोना चेक डेटा टाइप ऑल्सो, बट इफ आई मेक इट एज 11, इज इट गोना गिव ट्रू स्टिल डेटा टाइप के हिसाब से? नहीं, राइट? तो इट्स गोना चेक वैल्यू एंड डेटा टाइप बोथ. क्लियर? और ये इट्स गोना चेक ओनली एंड ओनली वैल्यू, राइट? एनी डाउट्स टिल नाउ? अभी तक कोई डाउट्स है? नो, राइट? ठीक है, देन वी हैड समथिंग दैट वाज कॉल्ड नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर याद है क्या? दिस थिंग, दिस थिंग, क्या काम था इसका? इसका एक सिंपल सा काम था जिसको बोलते थे इट जस्ट रिवर्सेस द आउटकम, राइट? तो मान लो अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग एंड वी हैव अ वेरिएबल टू प्ले विथ. नो वी डोंट. So let's say we have var a equals to 10 and we have var b equals to 10 and I went and did a double equals to b. Am I going to get true for now? True आने वाला है, right? But वही अगर मैं ये कर दूं, what am I going to get now? False आएगा. तो इसका बस लिटरली एक ही काम है, जो भी आउटकम आने वाला है ना उसका अपोजिट कर देगा, राइट? दैट्स वाई इफ आई गो एंड राइट ट्रू, इट्स गोना मेक इट अपोजिट, फॉल्स बना देगा उसको. क्लियर? क्लियर? ठीक. तो नाउ लेट्स से आई हैव ए एंड आई एम राइटिंग बी. अभी क्या होगा? हमने तीन एलिमेंट्स लिखे, राइट? ट्रिपल इक्वल्स टू नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी एक नॉट ऑपरेटर लगाया और उसके बाद डबल इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब हम डेटा टाइप और वैल्यू दोनों चेक करेंगे, राइट? तो इन दैट सेंस, अच्छा क्विकली टेल मी console.log a triple equals to b, this thing is gonna be false. Yes, yes. And इसका just opposite कर देगा next line with a not operator, तो it's gonna give us true. ठीक? क्लियर? तो नॉट का जस्ट एक पर्पस है पूरे जेएस में, एंड दैट इज रिवर्सिंग द आउटकम. क्लियर? क्लियर? नो प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन. तो और क्या था? इन हेयर इतना ही था. ठीक है. इफ यू गाइज
अच्छा, let's talk about it anyways. If you guys remember, we missed something, that was we had something that was called types of variables. क्या मतलब, एक तो var पढ़ा था. Did we learnt about something else? var let const, right? ये तीन पढ़े थे. डिफरेंस याद है क्या किसी को? अच्छा ठीक है, लेट्स ट्राई टू रिमेम्बर इट अगेन. लेट्स से हमने इस चीज को क्या बोलते थे? स्कोप. याद है? स्कोप. स्कोप, राइट? तो इफ आई क्रिएट अ स्कोप और उसके अंदर आई हैव डिफाइंड अ वेरिएबल वेर ए इक्वल्स टू 10, राइट? एंड इफ आई ट्राई टू reassign it and print it console.log a, am I gonna get a की वैल्यू मिलने वाली है, राइट? राइट, मिलने वाली है. तो इफ आई गो एंड डू नोड रिविजन, हमें a की वैल्यू मिलने वाली है. वही इफ वी डिड दिस एग्जैक्ट सेम थिंग विद लेट, तभी मिलती क्या? लेट्स सी, लेट्स सी. लेट a इक्वल्स टू 10 एंड हम उसके स्कोप के बाहर आ रहे हैं, एंड वी आर डूइंग a इक्वल्स टू 20 and again we are doing console.log a. Am I going to get the value? Okay. Okay, so that is mixed. वैल्यू तो डिफाइन हो गई है ना, राइट? बट क्या होगा इफ आई पुट इट अबव, ऊपर रखूंगा तभी. नाउ अभी एरर आने वाली है, राइट? सो इफ आई डू रिविजन, आई वाज एक्सपेक्टिंग एन एरर, बट ठीक है. मीन इसका डिफरेंस कैसे बताऊं मैं विदाउट टेलिंग यू अबाउट होस्टिंग? somewhere above we are defined. No, we haven't. नहीं गया हमने. अच्छा, दैट्स फाइन, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, कोई नहीं, ये कवर हो जाएगा, दैट्स फाइन. तो where and let, where basically this is gonna be in global scope. So for now you can just keep it this in mind, and this is gonna be in local scope, right? तो आई मीन चलो एक और तरीके से समझाता हूँ. लेट्स सी. तो लेट्स हैव अ वेरिएबल 10, राइट? वेरिएबल a इक्वल्स टू 10. लेट मी सी. एंड इसके अंदर लेट्स ट्राई टू एक्सेस इट, राइट? तो फॉर नाउ कैन वी एक्सेस इट? वेर है, तो वेर के लिए तो वी नो कि वी कैन एक्सेस इट एनीवेयर, इसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपको, राइट? तो वेर के लिए तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा. लेट के लिए भी वो एक बार डिफाइन हो गया है, ठीक है, चलो कोई नहीं. लेट मी शो यू. दैट्स फाइन, बट लेट्स से आई हैव डिफाइंड अ लेट a इक्वल्स टू 10, राइट? एंड फिर मैंने एक स्कोप बनाया और उसके अंदर आई डिड लेट a इक्वल्स टू 20 एंड आई एम डूइंग अ कंसोल डॉट लॉग a. चलो, दिस इज फाइन नाउ. तो टेक्निकली हमने एक वेरिएबल बनाया a, हमने उसको एक वैल्यू असाइन की, और हम फिर से वही वेरिएबल बना रहे हैं और फिर उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं. हम दो बार वेरिएबल एक जैसा बना रहे हैं, राइट? तो इज दिस समथिंग दैट शुड बी लीगल? करने देना चाहिए. रीअसाइन नहीं कर रहे हैं हम, फिर से नया बार डिफाइन कर रहे हैं, ठीक? आई एम नॉट डूइंग दिस. I'm again defining it, right? तो if I do a console in here, अभी क्या प्रिंट करेंगे हम लोग? अभी 20 प्रिंट करेंगे, राइट?
ठीक है, तो आई मीन एग्जैक्ट डिफरेंस तो नहीं बता पाऊंगा विदाउट होस्टिंग, बट दैट्स फाइन। चलो छोड़ो, इतना इतना ध्यान रखो कि वैर जो है वो ग्लोबल स्कोप रहेगा, लेट जो है लोकल स्कोप रहेगा, और लेट एंड कॉन्स्ट इन दोनों में क्या डिफरेंस था, याद है? करेक्ट, करेक्ट। तो लेट में, लेट से आई हैव गिवन इट अ वैल्यू 10, एंड इफ आई ट्राई टू रीअसाइन इट, आई कैन डू दैट, राइट? लेट में कर सकते हैं, लेट में कर सकते हैं, बट वही कॉन्स्ट में नहीं कर सकते ये काम, राइट? तो इफ आई डू अ कॉन्स्ट d equals to 20, and if I try to do d equals to string, this is gonna give error, right? Let me quickly console.log a comma b. ठीक है, if I run it, I'm gonna get error just because const जब भी यूज करेंगे you can't reassign it a value. ठीक है, हाँ, द थिंग इज दैट आई, मतलब इन दोनों के बीच में प्रॉपर डिफरेंस पता है कब पता चलता है? व्हेन वी टॉक अबाउट होस्टिंग, राइट? बट फिर वो कॉन्सेप्ट बाद के लिए, फॉर नाउ वी डोंट नीड टू नो दैट। बट हाँ, वी ऑलरेडी नो फॉर लूप, राइट? चलो लेट मी राइट इट, लेट्स सी इफ you guys can tell me. Let's say I've written where I equals to 0, I is less than or equals to 5, I plus plus, right? और let's go with 5 only, ठीक है? एंड तो ये लूप चलेगा, एंड आफ्टर दैट इफ आई डू अ कंसोल डॉट लॉग आई, क्या लगता है व्हाट एम आई गोना प्रिंट इन हियर? लूप के बाहर कंसोल कर रहा हूँ, नॉट इन लूप। नहीं होगा, ओके ओके। इफ आई डू अ नोड रिविजन ऑन इट, 5 मिलेगा। वाई? इटरेशन कितनी हो रही है? इट्स गोना रन फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड 4। कितनी बार चल रहा है, राइट? और 4 पे ये लूप रुक गया, तो वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू स्टॉप एट 4, राइट? बट क्या हो रहा है, ये एक और बार चलेगा इन ग्लोबल स्कोपिंग, एंड वो 5 उसकी वैल्यू कर देगा। वेयर एज इफ आई डू दिस एग्जैक्ट थिंग ऑन लेट मी कमेंट दिस वन आउट। अभी बोलो, अभी व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग नाउ? If I do revision, we are gonna get error, right? क्यों? क्योंकि I डिफाइंड ही नहीं है, राइट? तो आई डोंट थिंक कि मैंने ग्लोबल और लोकल तरीके से आपको कभी भी वैर लेट बताया है क्या? बिकॉज जब मैंने पढ़ाया था तब वी डिडंट नो अबाउट लूप्स, राइट? तो दैट्स व्हाई आई हैव नेवर टेकन दिस एग्जांपल। कभी बताया नहीं होगा, राइट, इस तरीके से? हाँ, तो इज द डिफरेंस नाउ क्लियर कि वैर और लेट में डिफरेंस क्या है, राइट? एंड टेल मी कि विच वन इज बेटर बाय दिस, वैर बेटर है कि लेट बेटर है? अच्छा, ऐसे नहीं डिसाइड करोगे, लेट मी गिव यू अ यूज केस। तो क्या होता है, मैंने आपको एरे पढ़ाया क्यों? रिमेंबर कि हमें जैसे फ्लिपकार्ट है, राइट? फ्लिपकार्ट, तो इसमें अगर मैं जैसे मोबाइल्स पे गया, राइट, तो हमें मालूम है कि एकदम, लेट्स गो विद दिस, हमें मालूम है कि ये डिव एग्जैक्ट सेम है हर एक मोबाइल फोन के लिए, राइट? तो इमेज सेम है, हेडिंग सेम है, बाकी लिस्ट जो है वो सेम है, एवरीथिंग इज सेम, राइट? राइट। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक डिव बनाना है। उसके बाद हमारे पास मान लो 10 आइटम्स है, राइट? तो वी हैव 1, 2, 3, 4 एंड 5, मान लो 5 आइटम्स है वी हैव। तो हम क्या करेंगे, विल जस्ट क्रिएट वन डिव, एक डिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एंड विल रन अ लूप ऑन दैट डिव फॉर 5 टाइम्स, राइट? तो ये डिव को ना 5 बार इसमें लूप चला देंगे। तो ऑल वी हैव टू डू इज, रादर देन राइटिंग 5 डिफरेंट डिव्स फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, हम सिर्फ एक डिव लिखेंगे और उस पर लूप चला देंगे।
ठीक है, तो नाउ लेट्स से कि हमें हमारे पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स है, तो ये लूप 5 पे रुक जाना चाहिए था, राइट? उसके बाहर अगर हम उसे एक्सेस करें, दैट शुड नॉट हैपन। इसी वजह से लेट गॉट इन मोर यूज रादर देन वेर, क्योंकि वेर लीड्स टू मेमोरी लीक्स, राइट? मेमोरी लीक होता है, दैट्स व्हाई दैट्स अ टर्म फॉर नाउ आपको, दैट्स फाइन। बट इज द डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट क्लियर लूप्स के हिसाब से? ठीक है एवरीवन, नो डाउट्स, नथिंग? ठीक, एंड डू यू थिंक दिस शुड वर्क इफ लेट डज नॉट वर्क? कॉन्स्ट आई, ये लूप ही नहीं चलना, ठीक, ये लूप ही नहीं चलना, बट वो डिफरेंट, दैट्स अ डिफरेंट रीजन। व्हाट इज इट? we have defined const I as 0 and we're trying to change it, right? So that's not gonna redefine it. ठीक है, तो is the at least basic difference between var let and const clear? Because trust me, हमने the difference that we learned ना, that's not really very applicable, right? The real difference lies in a keyword that is called hoisting, and you learn it later. अभी नहीं, बाद में जब एडवांस पढ़ेंगे और, ठीक है, तो दैट्स वेयर द रियल रीजन लाइस। ठीक है, ऑलराइट, चलो, तो do you want break? अच्छा, let's take a break of 3 minutes and then we'll get back and we'll start with what all we have covered. हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने कवर कर लिया वेरिएबल, राइट? We covered mathematical operator, comparison operator. Let's start with conditional, right? We'll talk about conditional after 3 minutes break. So let's get back at 9:09. All right. Check.
एवरीवन बैक आगे सारे ऑलराइट ठीक है तो वी हैड टू टॉक अबाउट कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट्स राइट ऑपरेटर स्टेटमेंट्स ठीक है तो कितने तरीके के कंडीशन स्टेटमेंट पढ़े हमने अच्छा अटेंडेंस लगा रहे हो ठीक है लगाओ 3 ओके तो ऑनेस्टली 2 पढ़े थे राइट तो एक तो था इफ एल्स दूसरा क्या था स्विच राइट स्विच था इफ एल्स में यू कैन से कि एक तो इफ एल्स होता है एंड देयर इज वन मोर दैट इज इफ एल्स राइट तो इफ एल्स या फिर जस्ट 2 स्टेटमेंट्स इफ एंड एल्स एंड फाइनली स्विच केस तो है राइट तो लेट्स टॉक अबाउट इफ एल्स कंडीशन राइट तो let's say I have a variable right and this says weather right weather और weather में लिखा है rain ठीक तो can you please write a code जिसमें you'll write if weather equals to rain get an umbrella print करो else print anything else whatever you want बट एक बार प्रिंट करके दिखाओ तो क्विकली आई नो यू गाइस कैन डू इट बट मेरी तसल्ली के लिए लिख रहे हो क्या करेक्ट 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 सब सही है सब सही तो ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू चेक इफ वेदर is equals to rain राइट हम कर देंगे कंसोल डॉट लॉग गेट एन अम्ब्रेला राइट एल्स console dot log no rain we can just print this right this works इस तरीके से चलता है इस तरीके से चलता है राइट बट लेट्स से कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी जिसमें मैं वेदर को कर दूं सनी तभी डू वी नीड एन अम्ब्रेला आई मीन ऑनेस्टली तभी तो तब भी चाहिए होगा क्या करूं दैट्स फाइन मान लो सनी है तो लेट्स से गेट अ कैप मे बी तभी क्या होगा इफ एल्स यूज होगा कि एल्स इफ भी आ जाएगा समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ राइट ठीक है चलो मैं लिख देता हूँ तो वी कैन गो विद एल्स इफ वेदर is triple equals to sunny I can go with console dot log get a cap right तो बेसिकली हम या तो इफ या एल्स में कंडीशन लिख सकते हैं ओनली व्हेन वी हैव जस्ट 2 कंडीशन either it's gonna be true or it's gonna be false but if there is a condition जिसमें it can be true but there will be multiple more possibilities in which it can be either true or false
तो वी आर गोना गो विद इफ एंड एल्स इफ स्टेटमेंट्स, राइट। ठीक है, तो मेरे प्रिमिटिव एग्जांपल्स छोड़ के लेट्स गो विद वन ऑफ योर ओजे एग्जांपल्स, राइट। तो अभी जो खोला था आई एम गोना ओपन दैट ओनली एंड दिस वन। ठीक है, तो यू गाइस रिमेंबर दिस प्रॉब्लम, याद है क्या? राइट, तो व्हाट वी हैव टू डू इज यू हैव बीन गिवन टू नंबर्स इन दीज वेरिएबल्स, राइट। तो हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है और एक इंग्लैंड का स्कोर है, राइट। नाउ इफ ऑस्ट्रेलियाज टोटल इज ग्रेटर देन इंग्लैंड, वी हैव टू प्रिंट ऑस्ट्रेलिया। If Australia's total is less than England, we have to print England. Else, we have to print tie. Right? So, can you please write this code for me? Take your time. I'll give you 2 minutes. या करेक्ट, ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ। ऑल राइट, तो हमें एक इफ स्टेटमेंट लिखना है, राइट। और उसके अंदर क्या लिखना है? इफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इज ग्रेटर देन इंग्लैंड। यहाँ पे क्या प्रिंट करना था हमें? व्हाट डू वी हैव टू कंसोल? ऑस्ट्रेलिया इज ग्रेटर देन इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, राइट। चल राइट, ऑस्ट्रेलिया एल्स इफ, देखो इस कंडीशन में एल्स इफ लिखना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंग्लैंड भी जीत सकता है, राइट राइट। बट देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी जिसमें दोनों के स्कोर्स बराबर होंगे और वो टाई हो सकता है, राइट। तो नाउ विल हैव टू राइट मल्टीपल मोर कंडीशंस। तो वी कैन गो विद इंग्लैंड इज ग्रेटर देन ऑस्ट्रेलिया, राइट। ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से जा सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे दिया है वी कैन गो विद दैट, वी कैन गो विद ऑस्ट्रेलिया is less than England. Tick. And in here we have to print England, right? Else अगर ये दोनों ट्रू नहीं है तो we know कि this is gonna be a tie. अगर कोई नहीं जीता तो it's gonna be a tie. Fine. लास्ट वाला else if लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज वी नो कि या तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है या फिर लैटर आने वाला है, जो भी है लास्ट, ठीक। तो इफ आई ट्राई टू रन इट, ठीक है, वो रन टाइम एरर, ओ वाह, इस बात का रन टाइम एरर ऑस्ट्रेलिया, ओके वी हैव डिफाइंड द वेरिएबल, कहीं पे वेरिएबल गलत लिखा है गाइस, ये रहा, ठीक, लेट मी सबमिट इट, अभी एक्सेप्टेड, ठीक। ना ना दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। अच्छा, क्विक क्विक रन टाइम एरर का मतलब होता है कि जब भी आपने सिंटैक्स में कुछ एरर डाल रखा है, राइट, तो कहने का मतलब आपका कोड ही रन नहीं कर रहा है, ठीक। अच्छा, एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है ओजे में?
पूरा कोड क्लियर हो गया, राइट। पार्शियली एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? पार्शियली एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? कुछ, राइट, राइट। तो अगर मैं चाहूँ देखना इसका सबमिशन, देख मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं चेक करूंगा, राइट। तो यहाँ पे कितने टेस्ट केस है? यहाँ पे इन टोटल 6 टेस्ट केसेस है, राइट। तो यहाँ पे फॉर नाउ सारे एक्सेप्टेड हो गए, बट मान लो किसी कोड में, लेट्स गो बैक टू द प्रॉब्लम एंड इन सबमिशन आई हैव अ पार्शियली एक्सेप्टेड, ठीक तो ये, ठीक। यहाँ पे देखो, आई हैव जस्ट 2 एक्सेप्टेड, तो इसको इसने पार्शियली एक्सेप्टेड बोला, राइट। और अगर कोई भी रन नहीं होगा, कोई भी आपका कोड में मतलब सिंटैक्टिकल एरर है, तो यू आर गोना गेट अ रन टाइम एरर, राइट। एक और एरर होता है, उसको बोलते हैं, अच्छा छोड़ो उसकी आपको जानने की जरूरत नहीं अभी। एल्स अगर आपने कोड में सिंटैक्स भी ठीक लिख रखा है बट लॉजिक ही गलत है, तो इट्स गोना गिव यू रॉन्ग आंसर, राइट। तो 3 स्टेट होने वाले हैं, या तो एक्सेप्टेड है, या पार्शियली एक्सेप्टेड है, या रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो या कीप दैट इन माइंड, ठीक है। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ये क्वेश्चन तो कर लिया। लेट्स सी व्हाट अबाउट दिस वन। इसके बारे में क्या सोचते हैं हम लोग? ये वाला प्रॉब्लम किया है क्या? किया है क्या? हाँ या ना? गलत हो चाहे सही हो, उससे मतलब नहीं है, किया होना चाहिए। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। तो वी हैव बिन गिवन 2 इंटीजर्स, बेसिकली एल, हमारे पास 4 वेरिएबल मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो एक एल मिल रहा है, वी आर गेटिंग अ डब्ल्यू, वी आर गेटिंग अ लेंथ वेरिएबल एंड वी आर गेटिंग अ विड्थ वेरिएबल, राइट। तो बेसिकली द क्वेश्चन स्टार्ट्स हियर, if the value stored in length is greater than the value stored in L, so something like this, if the value stored in length is greater than the value stored in L and the value stored in width is greater than the value stored in W, and the value stored in width is greater than the value stored in W, we have to print upload, right? Else if value stored in length is less than that, ठीक है। तो else if value stored in length is less than L, what we have to do is we have to print increase length, right? या फिर अगर width is less than W, we have to print width on this increase width, ठीक। तो I have draw a basic outline, you guys write a code for me for this thing. Everyone please try this. गाइस लिख रहे हो क्या? अच्छा कोड लिखोगे ना तो एक बार पहले 1 टाइप करते ना, सो दैट आई नो कि आप लोग लिख रहे हो, राइट। नहीं तो पता नहीं चलता कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो कि लिखने में बिजी हो। ओके वी हैव फर्स्ट कोड, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने लिख लिया है, let's say given that this assignment was released before you knew about and operator, right? तो लेट्स से मैंने मना कर दिया कि आपको एंड यूज नहीं करना है, तब कैसे करोगे? सर उसके बारे में सोचो। अगर एंड ऑपरेटर यूज करने से मना कर दिया, you should not be using and operator, then okay, ठीक है, that works I guess. We'll have to do nesting, right? नेस्टिंग करना पड़ेगा, तो नेस्टिंग का मतलब याद है क्या? I'll do it, come on guys, कोई नहीं मैं करता हूँ, बट टेल मी क्विकली कि नेस्टिंग का मतलब याद है? We have learned nested loop, we have learned nested if else conditions, but do we know the meaning of nested? एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, right? So let's say I've written a condition if length is greater than L, right? So I'm checking if my length is greater than L, given that I'm not using AND operator, तो इसका मतलब एक कंडीशन तो ट्रू है. Now inside this I'll check the another condition. I'll write if width is greater than W, right? तो हमने दोनों कंडीशन चेक कर ली. वी आर चेकिंग कि if length is greater than L or if width is greater than W. If that goes, we have to print console.log upload. Makes sense or not? इतना सा कोड सेंस बनाता है, हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, बट डज दिस मेक सेंस? क्या हो रहा है यहाँ पे? राइट, राइट. सो इफ दिस कंडीशन डज नॉट कम्स टू बी ट्रू, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो वी नो कि द लेंथ दिस थिंग इज लेस देन एल, राइट? तो वी कैन सिंपली प्रिंट एल्स, वी कैन गो विथ console.log एंड क्या था यहाँ पे? इंक्रीज लेंथ, राइट? इंक्रीज लेंथ. ठीक है, तो वी नो कि इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, तो दिस विल बी ट्रू बाय डिफॉल्ट. तो द एल्स स्टेटमेंट विल बी ट्रू and will be printing increase length. Thick and same thing can be done about width, right? So we can do for width. So if width is greater than W, फिर उसके अंदर हम चेक करेंगे if length is greater than L, and then we can go with console.log. If this both are true, we'll upload it. Else console.log increase width. अच्छा, इतना कोड लिखा है, कितने लोगों को सेंस बना रहा है और कितनों को नहीं बना रहा है? हाँ यस सुजीत, कर सकते थे. देयर आर मल्टीपल वेज बट दिस इज वन ऑफ देम. ठीक, राइट. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वी आर चेकिंग इफ आवर लेंथ इज ग्रेटर देन एल, राइट? यहाँ पे बोला गया है कि इफ दिस बोथ थिंग्स आर ग्रेटर, राइट? तो वैल्यू स्टोर्ड इन लेंथ इज ग्रेटर देन वैल्यू स्टोर्ड इन एल एंड the value stored in width is greater than W, print upload. ठीक, if these two conditions goes to be true, we are gonna print upload. Else ये condition false है, तो we are gonna print increase length, and that same thing is gonna happen for width, right? So let's try to run it, and this goes fine. ठीक, so basically we saw an example of writing a nested if else condition. Clear everyone? समझ आया? ठीक, बट इतना बड़ा कोड लिखने की कोई जरूरत थी, given that you guys are have already answered it? Not at all, not at all, right? All we had to do was just write if length is greater than L and width is greater than W. बस इतना लिखना था, राइट?
and we can go with console.log upload, right? If this condition does not comes to be true, now we know कि या तो length के साथ घपला है या width के साथ घपला है, right? We can go with length if length is less than L, right? We can go on for printing console.log, right? और यहाँ पे लिख देंगे increase length else if this is also not true, we know कि width is the problem here, so we can go for increase. कर सकते हैं right? So this should also be completely acceptable, right? And given that by now you already know everything, so both of them is fine, right? ठीक है, तो लगे हाँ तो let's talk about what's this called again? Remember, इनको क्या बोलते हैं? कौन सा ऑपरेटर तो बोलते हैं इनको? एंड और दैट्स फाइन. लॉजिकल किसको याद आ रहा है? लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल याद है, राइट? हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर वो लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट? ठीक है, उसको कवर करने से पहले एक और छोटी सी चीज कवर कर लेते हैं. वो था टर्नरी ऑपरेटर. क्या है ये चीज? रिमेम्बर, याद है कि किसी को? टर्नरी, तो इट्स बेसिकली शॉर्ट फॉर्म फॉर इफ एंड एल्स कंडीशन, राइट? तो मान लो अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा इफ ट्रू console.log yes else console.log no, right? If I want to write it in ternary operator, I can go with the condition if it's true, right? I have to write a question mark and I can write console.log yes else console.log. Remember this thing, right? So it's fine if you have to go for if else condition, but आपको if else if लिखना है, we can also do it, but it's not recommended क्योंकि it gets very clumsy and does not looks good, right? ये better दिखता है और ज़्यादा time भी नहीं लेता है. ठीक, alright. So let's quickly talk about logical operators. ठीक है, तो अच्छा switch let's quickly cover it anyways, right? So switch cases is also like if else condition, but if else condition के बजाय switch is mostly used when we know कि outcome is gonna be out of certain things, right? So let's say कि I have a number from 1 to 7 and I know कि I have to assign 1 to Monday, 2 to Tuesday, Wednesday, something like this. तो I know कि this is gonna be fixed, I can go with switch cases for that, right? तो switch case का syntax बस बताओ, याद है किसी को? तो we can write switch और उसके अंदर जाता है condition. Aside from that, cases, correct? So I'll be writing case and in here this condition will come, right? तो case and condition, जो भी condition है, let's say condition for now 1 है, right? तो if it's 1, फिर क्या होगा? Then I'll go with whatever I want to print. Let's say console 1 है, तो I'm printing Monday, right? And then if the case is 2, I can print console.log Tuesday, right? Am I missing something? Break, right? तो हमें ब्रेक स्टेटमेंट भी लगाना जरूरी है स्विच केसेस, ठीक है? नहीं लगाओगे तो क्या होगा? कोई भी कंडीशन ट्रू आएगी, लेट्स से 1 ट्रू आया, उसके बाद का नीचे का सब कुछ प्रिंट कर देगा वो स्टिल,
ठीक है, we don't want that. If 1 is there, we have to just print that, right? Let's say I'm not giving any number between 1 to 7, कोई भी random number दे दिया and I have to print invalid. So is there some way that we can print something by default, a final else condition in switch? Default case, right? So we have a default case also, right? Or usme we can just go and print something, right? Invalid or something. So basically यही है switch का condition, right? ठीक है, that's fine. ठीक है. Now let's talk about logical operators. ठीक, तो एक है and, एक है और एक है not. Let's talk about and first. So let's say I am doing console.log true and false, right? तो मैं बोल रहा हूं कि print something if this condition is true and false. What do I mean by that? क्या रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग? False. Why? So can I say कि in and operator, if any one of the condition is false, the entire equation, if I may, is gonna be false. Is this statement, will this statement hold true in every case? In every case, right? तो अगर मैं भले ही मेरे पास 50 ट्रू क्यों ना हो और एक फॉल्स हो, it's still gonna be false, right? So quickly tell me, I have a true at first, then I have a false, and finally I have a true. Does this changes anything, or still this is holding? Right? We're still gonna get false. That's the basic right? तो हमें still false ही मिलेगा, right? What about or operator? और क्या करता है? और क्या करता है? तो can I say if any one of the condition is true, the not, I can't say entire equation, but I can say कि it's gonna be true, right? Can I say this? Can I say this? Right? So this, if this prints false, console.log true or false or true, ये क्या प्रिंट करेगा? ट्रू प्रिंट करेगा, राइट? अच्छा, ठीक है. Let's say I have console.log 1 and 1 and 0. What now? Why false क्यों? I was thinking something about error. Error नहीं आएगा क्या? Right? So we already know the concept of truthy and falsy values. Right? So 0 comes under a falsy values, right? If I do a revision in it, I'm gonna get 0. क्यों? क्योंकि एक भी statement false हुआ, entire thing is gonna get false, right? वहीं if I write console.log 0 or 0 और 0 और 1 और 0, अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग? 1, राइट? तो एक भी स्टेटमेंट 1 हुआ और ट्रू हुआ, इट्स गोना बी ट्रू. क्लियर है? राइट, तो लेट मी सी इफ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दैट. यस, आई हैव. लेट्स सी.
This one. I mean, easy, right? So you have been given six numbers stored in the variable with the following names: 1, 2, 3, 4, 5, and 6. All you have to do is find the value of sum 1, that is 1 plus 2, and sum 2, that is 4 plus 5. And finally, आपको ये conditions run करनी है. Can you guys do this? I'll give you 5 minutes actually. Given that you have already solved it, इस वजह से 5 minutes दे रहा हूँ. कर लोगे? 1 और 0. ठीक है, तो let's try. Your time starts now. 45 पे I'll start doing it. Try. Shift plus enter, guys. Shift plus enter. Correct. 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 Correct.
ठीक है, alright, so let's do it together. हमें क्या करना है? First we have to sorry, first we have to create a variable these two, sum1 and sum2, and basically उसमें we need to get the sum of 1, 2 and 4 and 5, right? So we can go on creating, let sum1 equals to 1 plus 2, and we can go for sum2. This will be 4 plus 5, right? उसके बाद we have created the variables. हमें अब क्या करना है? If both the following conditions are true, we have to print yes, else no, right? So easy. All we have to do is we have to write if someone is greater than 3 and sum 2 is greater than 6, right? And it's better to keep them in brackets, right? ताकि उन लोगों का system separate रहे. Right, so we can wrap them, and if this conditions comes out to be true, हमें क्या print करना है? हमें क्या print करना है? No, right? अगर ये true है तो हमें print करना है yes with a capital Y, right? So we have to print yes, and अच्छा इस चीज का भी ध्यान रखना, it's case sensitive, right? तो ध्यान रखना कि आउटपुट में क्या आ रहा है. If it's capital N and O, then that might be an issue अगर आप small print कर रहे हो तो. ठीक है? So else we can go with, right, and I can run it. That's fine. Easy था, right? Everyone, ठीक है? Clear है ना? No issue in logical operators. Not. Let's quickly talk about not also. So let's say if var flag equals to 2, right? तो अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ कि if flag and flag console.log 1, else if not flag and not flag console dot log 2, else अच्छा चलो इतना ही बताओ. Am I gonna print 1 or am I gonna print 2? प्रिंट होगा या 2 प्रिंट होगा? Okay, let's see. ये condition overall, is it true or false? Now flag is true, right? Flag is true, and we have this thing. So this is जितना मैंने mark किया, is this gonna be true or false? That particular thing, it's gonna be false, right? So we have a false and a true. Is this gonna be true or false? ये false होने वाला, right? So this is going to be false. इस condition पे आओ. This thing, is it true or false? Just the marked one. False, right? False. And we are writing false and false. So of course this is false, right? So we are not gonna print either of them. दोनों में से कोई print नहीं होगा, right? Now let's say I have else if, let me write it in the next line. So else if अभी will be printing 3. Why? Because given that this thing is false, we have a or operator, right? तो भले ही एक भी false है, if we have even one true, this statement is going to run. Clear how and or and not works?
right? Let's quickly talk about array so that in next lecture we can just go about loops. ठीक, so we have a array, right? Array ka index, does it runs from 1 or it starts from 0? 0, right? So let's say I have a, I have 2, I have 2, and I have 5. If I print console.log array, am I going to print the array or am I going to get an error given that I'm using different data types? No error, right? It's going to print array. ठीक, given that JS is a loosely typed language, हम array में भी कोई से भी data type store कर सकते हैं, right? So if I print the array, we will get the entire array. Now, if I want, हम जानते हैं कि string में तो possible नहीं है, but if I want to do this, can I do this? Can I do this? Will the array get updated or not? राइट, तो अभी ट्रू के बजाय हम लोग फॉल्स यूज करेंगे, राइट? तो आई विल बी डूइंग दिस, ठीक? दैट्स बेसिकली अपडेटिंग एन एरे. लेट्स से आई वांट टू ऐड समथिंग इन द एंड ऑफ एन एरे. जैसे 5 है, इसके बाद आई वांट टू ऐड अ स्ट्रिंग नेम्ड नेम, राइट? मान लो मेरे पास एक str है और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग लिख रखा है, राइट? तो ये मुझे इस एरे में डालना है. हाउ कैन आई डू दैट? पुश. हाउ डू वी राइट इट? कैसे लिखेंगे? इफ यू रिमेंबर इट, str.push. str.push नहीं, array.push, राइट? एरे में पुश करना है. व्हाट वी विल डू इज array.push और उसके अंदर विल पुश द str. यस, विल दिस वर्क? राइट. तो अभी क्या होगा, हम एरे में बेसिकली उस स्ट्रिंग को पुश करेंगे, राइट? व्हाट इफ आई वांट टू रिमूव इट? उसे हटाना है तो pop, pop. So do I have to write something like this? या फिर कैसे लिखना है? Just pop works, right? So if I just go and write pop, it works because it knows कि हमें बस last element पकड़ के उसे हटाना है, right? So if I do a node revision, now we have a updated array, right? तो उसमें ये है string, and if I do a pop in it, I'm gonna get this, right? So quickly tell me if I do something like this, right? ठीक, इसको थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है? Come on guys, take your time and print the final array for me. Finally क्या आने वाला है? Write that array. Right? Let's see. So we have this as an initial array, right? We are doing a push in it, right? So now we are doing
a push in it, हम क्या कर रहे हैं, हम str here adding string, right? Then again we are doing a push in it, फिर से push कर रहे हैं. तो now I'll just copy this array and we are just adding again 6 in it, 6 add कर रहे हैं, right? Then again on this, right? Then we are again pushing 7, right? So 6 और फिर उसके बाद 7, right? But after that we are popping it twice, right? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, we'll just have 6, right? The last element will get deleted. उसके बाद we are popping it once again, एक और बार pop कर रहे हैं, तो now 6 will be popped out, ठीक? एंड फाइनली हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें एक बार फाइनली पुश कर रहे हैं 8, राइट? वेल फाइनली पुश 8, ठीक? तो वी आर गोना प्रिंट दिस थिंग, राइट? लेट मी क्विकली प्रिंट इट. ठीक है? क्लियर हाउ ऑल दैट वर्क? क्लियर? ऑलराइट, ग्रेट. तो या that's pretty much it. मतलब first part of revision, and that's all that we had to cover. ठीक.